And welcome back to SK Monicus and we are back again with another video of mine and आज हम लोग जो बात करेंगे it is about a very important function in mathematics and in physics. So overall let's call it mathematical physics. तो ये function which is called the Dirac delta function. It is really helpful जब हमें एक किसी basically particular point पे एक infinite चाहिए होता है. You need an infinity at a particular point and zeros at all the other points. Then that is where the Dirac delta function comes into play. Well, what this function is about, मैंने already पहले एक वीडियो में बताया है कि this function delta at x, this is defined to be a function which is 0 if x doesn't equal 0 and this is infinity if x equals 0. That is how we define the Dirac delta function. So here you call it the Dirac delta function. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बट फर्स्ट थिंग इज इट राइट टू कॉल इट टू इवन कॉल इट अ फंक्शन वेल इसे जनरलाइज्ड फंक्शन कहते हैं क्योंकि अगर इसकी x इक्वल 0 पे देखो वैल्यू इंफिनिटी होती है ना जस्ट एट x इक्वल 0 अगर इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है सो यू सी कि एक बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल फंक्शन है दैट्स व्हाई मैथमेटिशियंस लव टू कॉल इट अ जनरलाइज्ड फंक्शन एंड इसको अगर एज अ ग्राफ अगर आप देखते हो सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि हो गया हमारा डेल्टा एट एक्स अगर दिस इज हाउ एक्स गोज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स नेगेटिव साइड हियर यू हैव द ओरिजिन तब यहाँ पे एक इनफाइनाइटली हाई फंक्शन है सो यू माइट जस्ट ड्रॉ इट एज स्ट्रेट लाइन इट इज इनफाइनेटिसिमली नैरो दैट्स व्हाट यू कॉल इट इनफाइनेटिसिमली नैरो तो इवन टू रिप्रेजेंट द नैरोनेस मुझे इसको यहाँ पे थोड़ा विड्थ देना पड़ेगा एंड लेट्स से इट इज इनफाइनेटिसिमली ये जो विड्थ मैंने ड्रॉ किया इट इज इनफाइनेटिसिमली नैरो एंड इनफाइनाइटली हाई एंड दैट इज द डेल्टा फंक्शन एट x इक्वल्स 0 ये इनफाइनाइट है इन हाइट एंड एट ऑल अदर पॉइंट्स इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है वेल हाउ इट इज हेल्पफुल टू अस कि ऑफन इन फिजिक्स प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर चार्ज डेंसिटी देखें या फिर कोई आपके पास डिस्क्रीट सेट ऑफ चार्जेस होते हैं बिकॉज यू नो दैट चार्जेस आर नॉट एक्चुअली कंटिन्यूअस कि जो हमारी चार्जेस की वैल्यूज होती हैं दे आर नॉट कंटिन्यूअस दे आर डिस्क्रीट सो यू एक्चुअली हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ चार्जेस वेयरएवर यू सी देयर आर पॉइंट चार्जेस लाइंग इन स्पेस सो कंसिडरिंग दैट अगर हमें बेसिकली टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है या फिर आपको टोटल चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करना है in that particular case you represent a delta function at all these points so you will have at one particular point कि यहाँ पे आपकी इतनी चार्ज होगी at all the other points you don't have basically charges तो एक point charge represent करना है that is how you do it अगर यही चीज मेरे पास over a body होती what I would do is that if it is a 2D body तो मैंने basically एक laminar body ले लिया then I would represent it by a surface charge density so I have a surface charge density for it sigma and ये surface charge density over the sheet spread है that is यहाँ पे charges over the sheet spread है and I can define a surface charge density but if I have a point charge instead जो कि मेरे पास हो सकता है how do I represent it then you can have a Dirac delta function जो कि एक point पे you will have infinite amount of surface charge density लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी होगा सो हाउ कैन यू हैव अ फाइनाइट चार्ज एट अ पॉइंट सो रिमेंबर दिस इज एक्चुअली अ मैथमेटिकल पॉइंट दिस इज अ मैथमेटिकल पॉइंट नॉट अ फिजिकल पॉइंट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी एक रेडियस होता है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस वरना एक्चुअली इन मॉडर्न फिजिक्स you won't even consider electron as a particle at least in the atomic model कि आपके पास atom है उसमें electron is not orbiting around the nucleus like a particle there are clouds of electron there is an electron cloud around the nucleus तो अगर मैं classical radius की ही बात करूं तो इसके पास एक radius होता है इसके पास एक size होता है and if I have too many of them what do I do then मुझे clearly पता है यहाँ पे discrete charges है you can represent this by the Dirac delta function well now the problem comes कि हमें एक infinity देगा well actually what you do is कि जब delta function को आप integrate करते हो it doesn't give you an infinity so if you try to integrate this delta function so the integral delta x
dx, and if I try to integrate it from negative infinity to positive infinity, in fact you don't even need to integrate it between the negative and positive infinities, this will actually give you 1. एंड वाई डज इट गिव यू 1? क्योंकि इससे कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप ऐसा मान लो कि इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल आपने ले लिया, आपके पास एक रेक्टेंगल है एंड इट हैज अ सर्टेन हाइट एंड अ सर्टेन विड्थ. So here you have a certain width, here you have a certain height. Now what you do is make it narrower and increase the height such that इसका एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा. एंड मैंने इसकी विड्थ एंड हाइट कुछ ऐसा लिया कि इसकी विड्थ टाइम्स हाइट 1 के इक्वल होगा, एक यूनिट एरिया होगा, इट विल हैव अ यूनिट एरिया. सो विड्थ टाइम्स हाइट इज 1, अ यूनिट एरिया. फिर मैंने इसे नैरो किया एंड इसकी हाइट को इंक्रीज किया, and I did them by such a ratio that I will always get this unit area 1. So I made it narrower and more heightened, and I keep doing so until मेरे पास ये जो हाइट होगी ये इंफिनिटी हो जाएगी, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, एंड मेरे पास ये जो विड्थ होगा इनफाइनिटिसिमल हो जाएगा. इन दैट केस, एंड ये मैं ऐसा करूंगा by taking all these limits कि ये जो मेरी एरिया होगी हमेशा 1 ही रहेगी. एंड व्हाट विल बी द एरिया? इन दैट केस यू हैव टू क्लियरली रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी. मैंने इसलिए लिया कि इट विल कवर दिस एंटायर रीजन ऑफ द डेल्टा एक्स, क्योंकि नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डेल्टा फंक्शन dx, तो ये अभी भी मुझे 1 ही मिलेगा. एंड दैट इज हाउ यू डिफाइन द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. So although it is a 0 at x doesn't equal 0 and infinity at x equals 0, लेकिन इसका जो हमारा एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये हमेशा 1 ही आता. नाउ द थिंग इज यू नीड नॉट टेक द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी एज लॉन्ग एज जिस रेंज पे बेसिकली यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो ये x इक्वल 0 पे स्पाइक करता है, at x इक्वल्स 0. तब एज लॉन्ग एज मैं इंटीग्रल इस रेंज में ले रहा हूँ, मतलब x इक्वल 0 के आसपास ले रहा हूँ, एंड इट कवर्स दिस, इस एरिया को कवर करता है, you will always get 1 as your result. So what you can instead do is take it maybe from negative epsilon to positive epsilon, and you have delta x dx, and you basically apply a limit that epsilon approaches 0 dx, and this will also give you 1. तो हमें इतनी large values तक नहीं जाने. You basically take it from negative to positive epsilon and you use the limit that epsilon approaches 0. So we come down to infinitesimal values, and उसमें भी हमारे limit of the direct delta function will actually give you 1 because the area has been defined to be 1. So now what's more interesting about the delta function is something like this कि अगर मैंने इसे एक function fx से multiply किया, so you have fx delta x this will basically give you nothing but f at a delta x. In this particular case a is 0. I'll tell you shortly what a is defined to be. This will basically give you f at 0 delta x. And why does it give you that way? क्योंकि अगर मैं देखूं x इक्वल 0 पे डेल्टा फंक्शन इनफाइनाइट होते हैं, x एट नन 0 पे डेल्टा फंक्शन 0 होते हैं. तो जब मेरा ये फंक्शन एक मेरा नॉर्मल मैथमेटिकल फंक्शन f एट x मल्टीप्लाई हुआ इस डेल्टा फंक्शन से, तो जो भी नन जीरो वैल्यूज हैं x की, तो उन सारी नन जीरो वैल्यूज पे ये जो मेरा f एट x इस 0 से मल्टीप्लाई होगा सिंस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी. द ओनली वैल्यू दैट विल रिमेन इज ये जो f एट 0, क्योंकि 0 पे तो डेल्टा फंक्शन आपकी इंफिनिटी को अप्रोच करती है, यहाँ पे इंफिनिटी के एग्जैक्टली इक्वल होती है. सो एट x इक्वल 0 हमारे डेल्टा फंक्शन एक्चुअल में इसके आई वुडंट कॉल फाइनाइट, इंडीड इट इज इनफाइनाइट, इसकी एक नन जीरो वैल्यू होती है जिसकी वजह से f एट 0, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने रखा, इसकी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है दैट इज नन जीरो. तो f at x delta x basically equals f at 0 delta x, and that is one very nice way of evaluating such integrals. So whenever you have to calculate f at x delta x dx, all you do is take f at x out as f at 0 and you have f at 0 integral delta x dx.
एंड एज लॉन्ग एज ये जो हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रल है ये इसको बेसिकली इस पॉइंट ये जो पॉइंट है हमारे पास, इनफैक्ट ये पॉइंट नहीं, ये जो रीजन है जहाँ पे ये डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे एक्स स्पाइक कर रहा है, एज लॉन्ग एज दिस रीजन एग्जिस्ट विद इन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम लोग अभी के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी ही लेते हैं. You can always write this down as 1 and you'll have f at 0. So this is what Dirac delta function is mainly used for, because you can take the function out of the integral using the Dirac delta function, and it's as simple as that. Now we can go one step ahead and मैं Dirac delta function other than 0 किसी और point पे भी define कर सकता हूँ, and it's something like this कि मुझे अगर यही delta function define करना है at some point a, so I write it delta x minus a, and there you have it. तो delta x minus a मैं लिखता हूँ as equal to, you have 0, इसकी दो वैल्यूज हैं 0 and infinity, 0 for x doesn't equal a and infinity for x equals a. तो जब आपका x a के इक्वल हुआ, so you will basically have a function or rather a value that spikes to infinity, and when x doesn't equal a, so you have 0 everywhere, and this spike that you'll see to infinity at x equals a, ये हमारे Dirac delta function होता है at x minus a. So you understand it this way that whenever you will basically put x equals a, तब यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, delta at 0 आपका infinite होता है, delta non zero आपका finite होता है. That is one very nice way of understanding this thing. तो अगर यही चीज मैंने किया f at x delta x minus a dx, तब अभी भी मुझे बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक मे बी इंटीग्रेट करना है और मे बी नॉट, बिकॉज इन केस मैंने अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे हो गया मेरे पास a माइनस एप्सिलन, यहाँ पे a प्लस एप्सिलन, सो आई राइट a माइनस एप्सिलन, a प्लस एप्सिलन, एंड द लिमिट एप्सिलन अप्रोचेस 0. तो इस केस में मैं देख सकता हूँ आई एम अप्रोचिंग दिस पॉइंट ए, तो इसके इनफाइनेटिसिमल विड्थ को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, एंड आई एम अप्रोचिंग दैट व्हाइल आल्सो लुकिंग एट इट कि आई एम कंसिडरिंग दिस रीजन जिसमें इसके पास एक इनफाइनेटिसिमल बट विड्थ है, इवन दो इट इज इनफाइनेटिसिमल, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एग्जैक्टली 0 एंड बीइंग इनफाइनेटिसिमल, and being infinitesimal is what we deal with in calculus and derivatives or in limits or integrals. So now in this particular case ये हमारा क्या हो गया, this will be equal to, अब ये f at x delta x minus a मैंने मल्टीप्लाई किया, delta x minus a apart from x equals a सारी वैल्यूज पे 0 होता है, so at all those values even fx will be multiplied by 0 value and it doesn't give you anything. The only possible way it will give you maybe some non-zero result is when f is considered at x at the x value as a. तो यहाँ पे x f at a मैंने बाहर लिया, integrate this thing, this gives me 1 and this basically equal to f at a. And you take this function out of the integral, you can see how the Dirac delta function lets you take it out of the integral and you have calculated this. तो ऐसे हम लोग किसी भी पॉइंट की सरफेस चार्ज या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डायरेक्शंस इन हाउ मेनी डायमेंशंस यू डिफाइन द डेल्टा फंक्शन. दिस इज वन डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन. इफ यू वांट टू डिफाइन इट एज मे बी इन मोर देन वन डायमेंशंस, तब इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन हैव मे बी द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, 3 इंटीग्रल्स, सो आई एम कंसीडरिंग मल्टीपल इंटीग्रल. सो यू हैव अ ट्रिपल इंटीग्रल delta x delta y delta z dx dy dz and that equals 1 again. So you can define the delta function in 3 dimensions and you can still have the integral as 1. अब यहाँ पे एक लास्ट हम लोग चीज देख लेते हैं. इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है. वन मोर प्रॉपर्टी इज सच कि डेल्टा अगर मैंने cx पे इवेल्युएट किया, सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट 1 over mod of c delta x, and this is one very interesting another property about the delta function. ये ऐसा क्यों होता है? delta at cx is equal to 1 over mod of c delta x, ऐसा क्यों होता है? You can look at it, इसका भी प्रूफ है just this way कि ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो जाती है of the delta function. This nothing but a property of the delta function itself.
यहीं पे अगर a को ही आपने 0 मान लिया, in that case you fall back to this one. So a more general property would be this, and ये सारी arise करती है from taking the limits that you have a rectangle with infinitesimally narrow width and infinitely high, and इसका area is always taken constant as 1, and you have this kind of delta function that defines it this way. So there are some fundamental properties and some derived properties to it. Well, looking at this one, अगर मैंने एक function f of x यहाँ पे लिया है, so I take a function f of x and then I take delta at cx, and then you have a dx and you integrate it within the range of integration that actually has this region जिसमें ये delta function exist करता है. Now what I do is I basically define another variable, maybe x dash that is equal to what, इसे मैं c times में x define कर देता हूँ. So you have another variable x dash which is c times x, and in that particular case you will see x as x dash over c. So you can write this as the integral of f at x dash over c delta at x dash, and times में आपका क्या हो गया, here you have dx, तब dx आपका यहाँ पे 1 over c हो जाएगा, and here you have x dash basically, so dx dash over c. तो ये मैंने देखा. ओके, नाउ 1 over c मेरा बाहर आ सकता है. What else can come out of the equation since ये अब मेरा delta x dash हो गया, and here you have dx dash. So you can clearly see कि अगर यही मेरे पास delta x dx होता, so I would take this function out of the integral. लेकिन यहाँ पे delta x dash dx x dash है, it still doesn't matter, क्योंकि at any other value apart from 0 ये function मेरा 0 हो जाएगा while being multiplied to the function delta function. If you consider 0 तो ये infinite हो जाएगा. So clearly see कि एक ऐसी limit exist करती है such that I can take this out at basically x dash over c as 0. यहाँ पे x dash as 0, अब x dash at 0 है तो x dash over c भी हमारा 0 होगा. So you have f at 0. So you clearly see that will be equal to that will be multiplied by integral of this term, जो कि again मेरा किसके इक्वल आ गया, this will basically equal to, यहाँ पे sorry 1 over c भी है, so over में c हो गया, and this equals 1 अगर इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करें. Now what you can write else here is कि इस 1 over c को मैंने ऐसे लिख दिया, इंटीग्रल f at 0 को मैंने क्या लिखा, it can be written somewhat like this, f at x times में delta x dx within the required range of integration. So for instance let's consider negative to positive infinity only, and since अब अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो यहाँ से क्लियरली मुझे एक प्रॉपर्टी मिलती है कि डेल्टा x, सॉरी दिस इज डेल्टा cx मस्ट इक्वल 1 over c डेल्टा x, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हुए. नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर कि ये हमेशा जो c होगा पॉजिटिव वैल्यूज ही आपको चाहिए. अब पॉजिटिव वैल्यूज ही कैसे चाहिए, वेल व्हाट यू कुड एज वेल डू वाज कि यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव टर्म इंस्टेड लिया होता, सो यू हैव समथिंग लाइक डेल्टा ऑफ माइनस सी एक्स. तो अगर मेरे पास c नेगेटिव होता या फिर मैंने c को पॉजिटिव ही लिया एंड आई इंस्टेड कंसिडर डेल्टा ऑफ माइनस सी एक्स, तब मैंने यहाँ पे क्या लिखा होता, you would have this term delta of minus cx, and then what I would have done is define maybe another variable, and मैंने इस minus cx को as x dash में भी ले लिया होता. When I consider minus cx as x dash, so you will see I will have over here minus x dash over c, and I take this out, लेकिन फिर भी ये होगा तो 0, because positive and negative 0 they are the same thing, they are 0, so it will still be equal to f at 0, and यहाँ पे over में there would be a minus c again over here. यहाँ पे इसके साथ एक माइनस भी आ जाता if you consider it this way, क्योंकि फिर यहाँ पे when you consider x equals x dash over c यहाँ पे था, and this term is negative, you would have a minus dx dash over c. So c was supposedly negative over here, or it wasn't. तो this overall term would still be positive. मतलब अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव फंक्शंस भी लिए तो भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है. What that means is that delta at cx is 1 over mod of c delta x. तो ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है about the direct delta function.
So that is about the number of properties that you must know about the Dirac delta function, which is a very interesting kind of function when you consider mathematics and physics. Electrodynamics में, as I told, इसके most proper uses होते हैं to represent the charge density of a point charge of a discrete charge. That was all for today's video of mine. Thanks to all of us.